morning, class 11th students. How are you? Hope you everyone fine. Class 11th students, as per the previous discussions, today we have to discuss about the topic comparing tables. Okay. Now, students, first of you all just seen what is the things over there. Okay. Then we have to discuss. Now, you can compare two tuples without having to write code. Okay, without having to write code with loops for it. Okay, for comparing two tuples, you can using comparison operator. Okay, through that comparison operator, you can compare the tuple like that: less than, greater than, equals, not equals. Okay, for comparison purpose, Python internally compares individual elements of two tuples, applying all comparison rules that you have read earlier. Consider the following code right now. Tuple A having the values 2 and 3, tuple B having the values 2 and 3. When we are just comparing both the tuples are equals, the representing answer is true. Same, tuple C having the 2 and 3, and when we comparing A and C, because there is the integer value and there is the string value, so it cannot be equals. Okay, so we can see that it is the false. Then if I am just trying A greater than B, it is also false because A equals to B is variable over there. Okay, if D having 2.0, 3 having 3.0, this is the floating point number. Okay, and when we have to just compare that D is greater than to A, it should also given a false. Okay, and when it is compare D equals to A, it's given true because this is value the 2 integer value and this is the 3 integer value. Okay, now if again we have to check it in the tuple E 2 3 4, there is one more extra and we have just comparing that A is less than E, so it is representing true. So as per these discussions, I hope you are understand how can you compare the tuples. Now students, again this is the things by which you have to clearly understand about the topics. Now again one example like that tuple 1, okay, having these values, and if we are checking the max in this tuple, okay, checking the max value in this tuple, we are getting that the 34. Okay, now tuple 2 is the string Karan, Jubin, Jara, Anna. Okay, and when we are just taking the max, so the maximum, okay, this is given. Why it is given the max? All of you know that in the ascending form A, B, C, D. Okay, what is the given that? Please note that the max function applied on sequence like tuple list will return a maximum value only if sequence contain values of the same type. If the tuple contains values different types, then it will give you an error. Okay, starting that mixed type comparison is not possible. Okay, like that AB having the integer, floating, list, tuple. Okay, then max AB is just impossible. Okay, and here is you have seen that this is the list, this is the tuple, and if again we have to find, there is just given tuple and list. Okay, the main function, what is the purpose of the main function? All of you know that. Okay, the main function is a function by which you have to got the minimum value of that tuple. Okay, this method returns the element from the tuple having the minimum value. What type of value? Minimum value. Just see this. Okay, the min function, the method returns the element from the tuple having the minimum value. Okay, syntax कैसा रहेगा?
First you write the min and then you use the function and you have to fill your and give your tuple. Okay, takes tuple name as argument, okay, and return an object the element with the minimum values, like that. ये कोई टपल है जिसमें इतनी वैल्यू है एंड जब मैंने चेक किया मिनिमम वैल्यू इन द टपल देन आई विल गॉट 10. okay, it is the minimum value in the tuple. now again if you just see this tuple 2 है और इसमें इतना सारा नाम लिखा हुआ है तो a से जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो सबसे मिनिमम मानी जाती है. ठीक है, ओके. सो like max function for min to work, the element of the tuple should be same type. okay, sum function, actually all of you then function takes the tuple sequence and return the sum of the element of the tuple. for the sum to work tuple must have to numeric element. अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो एलिमेंट होना चाहिए वो टपल्स के वो न्यूमेरिक होने चाहिए. आइए देखते हैं. okay, now where is that function sum works as per the following syntax. suppose that this is the sum, okay, this is the tuple and it is the parenthesis where the tuple is in the tuple of element sum of to be calculated. फॉर एग्जाम्पल वैल एक टपल है जिसमें इतनी सारी वैल्यू है. जैसे हमने सम वैल किया ऑटोमेटिकली इन सभी का क्या लग गया, प्लस साइन लगाकर, और इन सभी का ऐड हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इंडेक्स मेथड. इंडेक्स, एवरीवन जस्ट नो दैट इंडेक्स वर्क्स विद द टपल इन द सेम वे वर्क विद द लिस्ट. जैसे लिस्ट के साथ वर्क करता था वैसे इसमें भी करेगा. This is it return the index of an existing element of a tuple. It is used as like tuple name dot index then item. If you just given that t1 and this is the list and t1 dot index, what is the index of 5? so 0 1 2. the index of 5 is 2. But if the given item does not exist in the tuple, the value given what? Value error exception. Okay, so students, I hope you understand about these. Okay, now there are the some students, let us discuss with this an example. So in this example students, as you have to see that write a program to print the index of the minimum element in a tuple. तो सबसे पहले आप एक टपल ले लेंगे. ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, टपल मिल जाएगा. ठीक है, when you just use the eval you have to got a tuple from there. so minimum के लिए mn आपने एक वेरिएबल ले लिया एंड min फंक्शन के साथ टपल को दे दिया. प्रिंट द मिनिमम एलिमेंट mn हो गया, मिनिमम एलिमेंट हो गया. अब क्या करेंगे, इज एट इंडेक्स. अब ये बताएंगे इज एट इंडेक्स, जो ये स्लैश दिया गया है ना, स्लैश इट मीन्स यू हैव टू जस्ट गो ऑन द नेक्स्ट लाइन. ओके, सबसे पहले तो आपको टपल मिल जाएगा. ठीक है, टपल के बाद से आपको मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा. मिनिमम एलिमेंट के बाद से आप अपना क्या करेंगे, इज एट इंडेक्स टपल डॉट इंडेक्स mn. ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, देखिए ये तो आपका स्ट्रिंग से एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जैसे स्ट्रिंग ये एग्जीक्यूट हो गया, मिनिमम नंबर ये हो गया और इज एट इंडेक्स ये एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, अब ये टपल डॉट इंडेक्स mn, तो अब ये जो mn है ना, mn इसकी इंडेक्स नंबर आ जाएगी. ठीक है, नाउ वी हैव जस्ट गो ऑन द काउंट फंक्शन. ओके, काउंट मेथड. व्हाट इज द काउंट मेथड स्टूडेंट्स, जस्ट सी दिस. Count method, the count method return the count of a member element object in a given sequence list tuple. You can use the count function as per the following syntax. आपको इसमें भी क्या करना है, सीक्वेंस का नेम मतलब टपल्स का नेम या लिस्ट का नेम दे देना है, काउंट लगा कर और उस ऑब्जेक्ट को दे देना है जिस ऑब्जेक्ट का आपको काउंट चाहिए. जैसे मान लीजिए कि t1 है. ठीक है, और ये एक आपकी लिस्ट है. ठीक है, ये टपल 1 है, इस पर ये लिस्ट है, इसकी जो मतलब सीक्वेंस है.
तो टपल 1 का काउंट फंक्शन के साथ अगर 2 की वैल्यू देखी जाए, 2 कितने बार आया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स। ओके, तो इस तरह से काउंट कर लिया जाता है। Now again is a program, you have to just do that program at your pyroid. I have seen that no one students are doing the program with the pyroid, and now one is just sending to me. Write a program to input a tuple and check if it contain the all elements as same. अब ये सेम करने के लिए पता चल गया। अब देखिए, आप एक पहले टपल ले लीजिए, ठीक है, उसकी लेंथ निकाल लीजिए और सबसे पहले उस टपल का काउंट कर दीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या है, जैसे कि टपल आपकी टीयूपी में आ गई, लेंथ से आपने लेंथ फंक्शन ले लिया, एक नम वेरिएबल लिया जिसमें टपल काउंट करना चाहते थे, कौन सी काउंट करना थे, जीरो इंडेक्स उसकी, ठीक है, किसकी, जीरो इंडेक्स टपल की जीरो इंडेक्स। इफ नम इज इक्वल, ये जो वैल्यू है, नम की जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू एल एन, मतलब ये जो वैल्यू एल एन आएगी, ठीक है, इसके अगर बराबर होगी तो टपल कंटेंस ऑल एलिमेंट, ऑल द सेम एलिमेंट्स, टपल्स क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स के होंगे, ठीक है। और एल्स अगर ये नहीं होगा तो टपल्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब देखिए, जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3 सब में दे दिया, जीरो इंडेक्स पे यही वैल्यू आ गई, तो नम की वैल्यू क्या हो गई, 23, एंड इसका अगर लेंथ निकाला जाए तो लेंथ कितना हो गया, 4, लेंथ क्या हो गया, 4। अब यहाँ देखिए, टपल कंटेन द ऑल एलिमेंट्स, क्यों बताइए, क्योंकि जो नम है, एन नम और एल एन की वैल्यू सेम आ गई, नम और एल एन की वैल्यू सेम आ गई, इस वजह से आपका टपल्स के जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सेम हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू। एक चीज़ मेरी समझ